एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस टॉगल बटन, जिसके थ्रू हम आइटम को अवेलेबल और अनअवेलेबल करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको डेमो देता हूँ। ये बटन है हमारे पास, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, दैट इज मेक अनअवेलेबल। व्हेन आई क्लिक हियर दिस आइटम इज अनअवेलेबल। सो लेट्स गो टू द मेन्यू। अभी आइटम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब मैं दोबारा जाके इसको अवेलेबल करता हूँ और इन दोनों को अनअवेलेबल करता हूँ एंड नाउ गो टू द मेन्यू। अब एक आइटम हमारे पास शो हो रहा है। सो दिस इज द टॉगल बटन, जिसकी हेल्प से हम आइटम को अवेलेबल और अनअवेलेबल कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट एंड क्रिएट दिस टॉगल बटन फॉर टू manage the item availability status. Now go to the admin controller and here we are going to create the method for to change the status of the item in a database. So we are going to change just one attributes of the item, and that is available. If that is true, it means the item is available in menu. If this is false, it means the item is unavailable. So here we are going to create a method for to mark the item is available and unavailable. So go to the browser, go to the blog, and this is the part 24 and toggle button for menu item availability and SQL MVC core. So here is the full explanation, also the code explanation, but here I am going to create the method and the name is toggle availability. So this is the method for to change the status of the item. So first we are going to check the session security, check the admin, the login user is admin, then check the item in the database, then check retrieve the item from the database, and then check if item is retrieved or not. Next we are going to get to change the status of the is available. So here is this is the item and that is also the item. So when it is true, then this not sign convert it to false. If false, then it convert to true. So logic to flip the availability status means if this is true, it's flip to false by help of this sign, and if it is false, it's flip to true. And this is the save changes in the database. And the next is the success message for to change the status of the item, and this is the redirect to action to manage the menu. That's it. So the HTTP post method is complete. Here is the flow is, here is the item ID, then check the session security, this again user is admin or not, then check item in a database, get item from the database. If it found in a database, it means it is not null. Then change logic, and here the logic is flip the availability status. If it is true, it's convert to false. If it is false, it's convert to true. And then save the changes in the item table. And here is the message for the success notification, and here is the redirect to manage menu, redirect to action. इस action को ये direct हो जाएगा so to this one. So that's it. अब हमें इसको कॉल करना है inside in the and this action and this menu manage menu. So right click and go to the view, and below here we are at the button which is used for to change the status to call this method. So here is this button. Before this button we will add this button code. So here we are going to first create the form, and then hidden one field to input to take the ID, and then pass to the toggle availability method or action. So now copy this code. ऑलरेडी हमने ये कोड बार बार डिस्कस की है, यहाँ पर मैं दोबारा थोड़ा इसका रिव्यू लेता हूँ। ये एक्शन है, इसका एक्शन टॉगल अवेलेबिलिटी है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, दैट्स वन. एंड हियर इज द पैरामीटर इज आईडी. सो आईडी पैरामीटर इज हियर. दिस इज द नेम ऑफ द इनपुट फील्ड.
मैंने पहले भी आपको बताया कि इनपुट पैरामीटर अगर आपको पास करना है एज ए पैरामीटर वैल्यू टू HTTP पोस्ट, तो देन आपको क्रिएट करना है एक इनपुट, वो चाहे जो भी फील्ड हो, बस उसको आपको क्रिएट करना है और उसको हिडन लेना है और उसका नाम सेम रखना है। अगर हिडन नहीं लेना है तो भी नहीं ले ले, बस सिंपल आपको नाम इसका सेम रखना है, बाकी वैल्यू खुद ब खुद वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, सेंड हो जाएगा एनी पैरामीटर में। बट हमें इसको यूज़र को शो नहीं करना है। इट इज़ क्रिएट फॉर हैंडल और लॉजिक to pass the ID and a form, and here is the title of if the item is available, it show make unavailable, and this is make available. I will show you in a demo. So button is the submit button, and button if the item is available then it show BTN secondary. If the item is not available, it show the BTN success. Means it show the change status of the button. And here is the BTN is available. This is the icon, and here is the delete button, but we are going to implement only this action in this video. So that's it. Now run the application. So now the application is run successfully. Go to and login as admin. Login and then go to the admin. Then go to the admin and go to the manage menu, close, and then simple click on this icon. When I click on make as a unavailable, so now click here is this item is unavailable. I'm again click on here is unavailable. So let's filter this unavailable. So जैसे मैं क्लिक करूँगा अनअवेलेबल शो हो गया। जब मैं इसको अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये अवेलेबल शो हो गया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ तो सारा लिस्ट हमारे पास शो हो गया। अब मैं दोबारा इसको अवेलेबल करता हूँ तो ये अवेलेबल हो गया, अब ये भी अवेलेबल हो गया। अब मैं इसको अनअवेलेबल करता हूँ और जाके मेन्यू में इसको चेक कर देता हूँ। सो देखिए अभी यहाँ से भी रिमूव हो गया, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। अब मैं दोबारा इसको अवेलेबल करता हूँ एंड देन गो टू द मेन्यू, तो अब ये शो हो रहा है। So that's it. So if you like the video, kindly subscribe, like and share the videos.